मैं पिछले 2 दिन चिंतन कर रहा था बीच बीच में कि हम लोग जो रूप के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं उसमें कुछ बेसिक दिक्कत हो रही है समझने में कि रूप मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, मेरी आत्मा नहीं है। इनमें से काफी मेरी आत्मा वाली बात अगर हम एक्सेप्ट भी कर लें, लेकिन मेरा नहीं है तो मैं क्या हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस पिछले दिनों कुछ कंफ्यूजन से ऐसे लगे थे जो परसों चर्चा हो रही थी। तो मुझे लगा शायद फिर थोड़ा और प्रयास कर लेते हैं, देखते हैं कुछ हमें और गहराई से इंसाइट डेवलप हो। तो मैंने जो हमने अभी तक सारे डिस्कशंस किए हैं रूप के बारे में और जो उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत चीजें थी, जो कि ये बेसिकली जो काउंटर इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग है ना कि देयर इज नो बीइंग हियर, दिस इज अ फंडामेंटल टीचिंग। कोई एक प्राणी नहीं है, कोई एक मनुष्य नहीं है जो इस 5 खंडों में विराजमान है या जिसके ये 5 खंड हैं। काफी काउंटर इंट्यूटिव चीज है। तो बेसिकली जो दिक्कत आती है रूप के संबंध में आती है और विज्ञान के संबंध में काफी आती है। तो उसका प्रयास करने के लिए मैंने जो सोचा कि हमने जो अभी तक चर्चाएं की हैं पूरी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, उसमें कुछ की सेंटेंसेस सिलेक्ट किए थे हमने, तो पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। लेट अस हैव अ री-लुक एट देम in a more concentrated manner at individual level, क्योंकि मेरे उसकी चर्चा करने से और उसको समझाने के प्रयास में कई चीजें जो मैं अज्यूम कर लेता हूँ शायद सत्य ना हो, तो इसलिए वो मेरा कहना उतना हर एक के लिए बराबर प्रभावशाली नहीं रहता। तो मैं सोचा कि मैं आपके सामने कुछ जो मुख्य बिंदु हैं वो रखता हूँ और फिर ब्रेकआउट ग्रुप में उनके ऊपर इंडिविजुअल छोटे छोटे ग्रुप्स में आप आपस में थ्रेड वेयर डिस्कशन करें कि इनसे हम समझ क्या रहे हैं। ये जो चीजें हैं उस बड़ी जो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, तो कृपया उसका ध्यान इसको नोट कर लें। एक हमने सुत्त काफी कोट किया था, नॉट योर्स। तो उसमें भगवान कहते हैं, I'll just read out the translation. Because this body does not belong to you or to anyone else. It is old karma and should be seen as generated and fashioned by evolution as something to be felt. So this is the basic teaching. So there are different words for the same fundamental teaching which we have been discussing. और उसी के बारे में एक और सूत्र था जिसमें हर एक इंद्रिय के बारे में कहा गया. I is old karma, it should be seen as generated and fashioned by evolution as something to be felt whenever each and every sense to sense based जो भी है सारे. और ये काफी हद तक की बात हमारे प्रतीत्य समुत्पाद से मिलती के ही संदर्भ में कही जा रही है. संखार पच्चया विज्ञानम, विज्ञान पच्चया नाम रूप. ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं इसके इम्प्लीकेशंस in terms of patisandhi vijnana and causing the origin of रूपा नाम. और दूसरा एक्सटेंड भी है उसका, तन्हा पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति. This also is traditionally this is spoken of as future, that is spoken of as past. तो ये भी this is also the root, same thing expressed in different words. फिर हमने धातु विभंग सूत्र से पढ़ा था कि भिक्षु
ये 6 धातुएं जो हैं, इसी को पुरुष कहा जाता है, इसी को पुग्गल कहा जाता है। कौन सी 6 धातुएं? पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, एंड देन ही एड्स दोस टू, आकाश धातु एंड विज्ञान धातु। ये है मनुष्य, लिविंग बीइंग। अगर आप रूप को देखना चाहें तो ये विज्ञान धातु को हटा सकते हैं। दैट्स जस्ट द रूप। देन वी हैव द सेलिब्रेटेड डिस्कशंस जो अनत्त लखन सूत्र में किया जाता है कि रूप पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कि हम ये नहीं कह पाते मेरा रूप ऐसा हो ऐसा ना हो, और कष्ट देता है तो इट इज नॉट माइन, इट्स नॉट मी। सिमिलरली क्योंकि अनित्य है और दुख है, इसलिए इसको मैं, मेरा है, मैं हूँ, ये नहीं कह सकते। अनदर आर्गुमेंट। तो ये सब जो आर्गुमेंट्स हैं जो रूप के बारे में हमने सेलेक्ट किए हैं, क्या हम इन आर्गुमेंट्स की गहराई को ठीक से समझ पा रहे हैं? तब रिक्वेस्ट की ईच हर एक ग्रुप में इसकी 3-4 चीजें जो हैं इस पे थ्रेड बेयर चिंतन हो कि इसका मतलब क्या है, क्या ये हमको समझ में आ रहा है, और अगर आ रहा है तो फिर कहाँ दिक्कत हो रही कि हम उसको रूप मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, इसको मानने में क्या दिक्कत, इसको समझने में क्या दिक्कत है, उसको अपने जीवन में उतारने में दिक्कत है, वो भी मालूम कर सकते हैं, वी नो दैट, बट इट्स वर्थ डिस्कसिंग इट। बट क्या ये हमारे दृष्टिकोण में ये बात आ गई है? क्या हमारा इस डोमेन में सम्यक दृष्टि हो रही है? वो मुख्य बात है। चाहता हूँ हम लोग आपस में चिंतन करें छोटे छोटे ग्रुप में, एंड देन वी कैन प्रेजेंट इट इन ए मेन सेशन, एंड देन वी कैन इंटरैक्ट टू सी हाउ इट। ओके, मैं ग्रुप बना देता हूँ, तो आप उस पर जाके चर्चा करिए। सर एक बार अगर मैं समराइज करूँ जो मैं समझा कि आपने पॉइंट्स बोले जो हमें चर्चा करनी है, कि ये हमारा शरीर अगर हमारा नहीं है तो जो आपने स्टेटमेंट दिया कि ये हमारे ओल्ड कम्मा है और उससे बन रहा है, इस पर चर्चा करनी है। दूसरा जो आपने बोला कि 6 पुरुष है जिसमें 5 धातु है और 6वां वियाण धातु है, इनसे मिलकर एक एनिमेट ऑब्जेक्ट बनता है। Can we have a summary of our discussions very precisely? Do we really, okay, first level, are we really convinced about this fact that this body is not personally belong to me? It's a part of nature because there's arisen because of various conditions. So the way I'm saying so is that, you see, many times I heard the discussion, someone just saying, we are not able to live up to it. No, we are not able to live up to most of the teaching. It's true. The issue is that we have to practice. And the reason we're not able to practice properly is because we're not confident of it. That's especially a counterintuitive teaching like that. So if we are really intellectually with Chintanamayi Panya, so to say, we have developed to such an extent that there's no doubt whatsoever in the mind that, of course, Rupa and Icha, I don't think anybody would have doubt about it, or that attachment to it causes suffering, but that it is Anatta. That's a real difficult stuff. So the idea was that those are the 4 or 5 core points which were given in favor of that, to explain by the Buddha. He had explained us in these previous teachings. तो क्या हमको बात समझ में आती है? पहले तो इतना ही कहें कि चिंतनमय कन्या के रूप में आर वी क्लियर? Because unless we are clear about that, then we'll never be able to move forward.
जैसे हमें मालूम है कि अगर हम वेदना के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, हमने करके देख लिया दुख होता है, लेकिन हम बार बार करते हैं, फिर दोबारा एफर्ट करते हैं, फिर ट्राई करते हैं। या सांस को जानना है, मान लीजिए, सिंपल सिंपल थिंग, सांस को जानने से समाधि का भाव बनता है, मन शांत होता है, ये में क्लियर है, कन्विक्शन है, एक्सपीरियंस है। अब हम सांस को ध्यान करते हैं, मन भटक जाता है, फिर हम वापस लेके आते हैं, फिर भटक जाता है, फिर वापस लेके आते हैं, क्योंकि हमें कन्विक्शन है कि ये ठीक है, ये करना चाहिए। अगर हमें इस तरह का कन्विक्शन भी हो जाए इस बारे में, पांचों खंडों के बारे में, स्पेशली जो मेन स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं, तो उससे काफी लाभ होता है, ऐसा मुझे लगता है। बीच में भूल जाएंगे, स्वाभाविक है, भूल जाएंगे, बट इट डजंट मीन दैट द knowledge we have gained is useless. It's going to be helpful in due course, slowly, slowly, slowly. It will permeate into our day-to-day life. So that is the whole idea. तो उस संदर्भ में मैं चाहूंगा कि आप कृपया ग्रुप्स में से क्या कोई स्टिकिंग पॉइंट है तो। पहला ग्रुप जो था, डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब और दूसरे लोगों ने मुझे कहा था कि मैं ही इसको आप समराइज जी करके जी बड़े जी रूप में जी अपने व्यूज पेश करूं। तो डॉक्टर साहब, जो आप कह रहे हैं कि चिंतन में तो काफी हद तक आती हैं बातें, जैसे जो हमारा शरीर है हमारे कर्मों की ही मैनिफेस्टेशन है, और इसके बारे सिर्फ में। एक मिनट, सिर्फ हमारा शरीर नहीं, दूसरा शरीर, हाँ जी, शरीर सभी जो है सभी सभी का। शरीर। हाँ, सभी शरीरों के। हाँ, सॉरी, हमारा नहीं कह रहा मैं, फिर वो आ गया ना, ये तबाव फिर आ गया उसमें। खैर, We एनीवे, don't get into language. What I meant was not only हाँ this body but हाँ, everything else. एवरी दूसरों के ऑल प्रति ऑल दूसरों लिविंग के बीइंग्स। प्रति भी अटैचमेंट इसी कारण होती है कि हम उसकी बात भूल जाते जी जी जी, नहीं जी। तो हैं। ये तो हाँ, अभी एक प्रश्न किसी ने मेरे से प्राइवेटली पूछा था, हाउ कैन वी एक्सेप्ट दैट यंग बॉय डाइड एट अ यंग एज? Well, obviously then we don't have faith in the law of karma. That's it. Simple thing as that. So these issues are, I mean, apparently very trivial at some level and extremely profound at other level. तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि जिस तरह से हम अपने बारे में, उस तरह दूसरों के बारे में भी यही बात सत्य है। हर एक, एवरी रूप, नियर, फार, small, big. So in that sense, yeah. So if it is, we are convinced about it, now we practice accordingly. And we find difficulties. Then we investigate क्या difficulties हैं। चिंतन के लेवल पर तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि इसमें कोई, हमें लगता है कॉन्ट्रडिक्शन है। इतने टाइम से हम सुनते आ रहे हैं और इतने अच्छे से आपने एक्सप्लेन भी किया है अलग अलग एस्पेक्ट से, तो इसमें तो कोई मतलब डाउट वाला कोई पॉइंट नहीं है कि भाई जो रूप है वो कर्मों की ही मैनिफेस्टेशन है, और साथ में जुड़ा हुआ है पटिच समुत्पाद, संस्कार से विज्ञान, और विज्ञान से फिर नाम रूप बन जाता है। तो वैसी जो जीवन की धारा चल रही है वो तो मतलब उसमें कोई किसी किस्म का डाउट तो नहीं है। एट इंटेलेक्चुअल लेवल वी आर एक्सेप्टिंग इट, उसमें कोई नहीं। ऐसे ही जब हम अनंत लखन सूत्र के बेसिस पे देखते हैं कि अगर ये रूप हमारा होता तो हमें कष्ट ना देता, और हम जैसा चाहते वैसा ही हमारा रूप होता, तो इसलिए इसको अपना कहना बेमायने है। लेकिन जो धातुओं की बात थी उसके ऊपर हम लोगों का थोड़े थोड़े एक्सपीरियंसेस डिफरेंट थे। हमारे ग्रुप में अच्छी इस पॉइंट पर काफी डिस्कशन हुई हमारी आपस में, और जो ये बात निकल के आई, कुछ लोगों को जैसे एक बड़े ग्रॉस लेवल पे हम देखते हैं कि पेट में गैस है, ऑब्वियसली वायु धातु है, या कोई गर्मी लग रही है, वो अग्नि धातु है, या पसीना आ रहा है, या आंख में आंसू निकल रहे हैं, या यूरिन पास करना है, तो वो जल धातु है। वो तो मोटे तौर पर तो बातें बड़ी क्लियर हैं, ये धातुओं हैं। लेकिन थोड़ा सा हम गहराई में जाएं तो हम लोगों के एक्सपीरियंस कईयों के थोड़े से
मतलब अच्छे गहराई में हो गए, कईयों के भी नहीं हुए। एक्सपीरियंस लेवल पे भी धातुओं का जो विषय जो है उस पर थोड़ा सा लेवल डिफरेंस है हमारे ग्रुप में, 3-4 लोगों में अपने जो है, कईयों को अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं, तो गहराई में भी जाए तो उनको लगता है कि ये इस वक्त जो मेरे पास ये कुछ सेंसेशन हुई है बॉडी में, इसमें अग्नि धातु प्रोडोमिनेंट है, या इसमें पृथ्वी धातु मिश्रण है, लेकिन इसमें पृथ्वी धातु प्रोडोमिनेंट है। तो कुछ लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस अभी तक नहीं हुए। तो ये थोड़ा डिफरेंट है हम लोगों का लेवल, तो ये मैं आपको पॉइंट आउट करना चाह रहा था। लेकिन ये बात ये भी थी कि जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में भूल जाते हैं, जब जाते हैं, तो वी स्टिल गेट, हमें जो एंट्रेंच डीप फीलिंग है आइडेंटिटी वाली, वो अभी है, अभी इट इज इंटैक्ट व्हेन वी मूव इन द प्रैक्टिकल लाइफ। तो ये मेरी समरी थी हमारे ग्रुप के बारे में। ठीक, थैंक यू। ओके, ग्रुप 2, रूम नंबर 2 में। हाँ सर, तो हमारे ग्रुप में निखिल जी और भंते महापन्यू जी थे और कल्पना जी। ओवरऑल डिस्कशन में ये बात निकला है, लाइक ओके, अंडरस्टैंडिंग लेवल इज देयर वर सम काइंड ऑफ अ डिस्कशन अबाउट द धातु एलिमेंट, लाइक यू नो वेयर not labeling it as such as a dhatu thing, तो वो we don't label it as such। ये भंते जी ने कहा था कि उनको वो he does not look at it in that way, more emphasis is on the kamma vipak, like जो पहला वाला जो आपने कहा था वो बहुत ही क्लियर है। एंड मेरे लिए what I see it, और paticca samutpad we were discussing it, so how I look at it is the first one is like this body is not yours is very clear in the understanding level, but when I look at it as at a practice level, how much do I implement is a big challenge. This is the very honest thing, like I don't think so I have been really doing it, I go on and off. Second thing is कि ये paticca samutpad, ये भी पता चल रहा है कि it's a stream of consciousness, it's a process which is happening, but at a understanding level, but when there are challenges in life, do I really implement it. Third thing जो निखिल जी ने कहा था बहिद्धा, like you know, looking at our own roop which is not ours and also looking at others, तो वहां पर उन्होंने बताया कि वो थोड़ा सा restlessness हो जाता है, like you know, when I see somebody else, like he was talking about his own family member, how do I come out of it. So these three difficulties are there. Fourth point, what was there is the मटीरियल फिनोमेना, दिस 28 मैटर रूपा का आप बता रहे थे ना सर, उसमें वो 4 तो बहुत क्लियर है, the rest of the thing, how does it influence in our understanding and practice, this is something which we wanted to understand. The fourth is जो 6 धातु की बात हुई थी, 4 is very clear. Fifth is the आकाश element which we cannot experience it through our bodily sensation. ये जो आपने विज्ञान धातु की बात हुई थी, the way I understand it, this is referring to the consciousness at the rebirth linking consciousness, right? It is not to do with the sense basis. This is how I understand. So we need a clarity on that. तो वहां पे हम अटक गए थे. Vijnana there refers to the basic sense-based consciousness. Sense-based also. Because every moment our sense-based consciousness is working. It's not just referring to relinking. In that particular context of that sutta. In the 6 elements, you're talking about both. Yeah, because the human beings, he's talking about what a human being is. Okay. The Rupa is the, you can say, first 5 or 4, and the other is the sentience part, the part which gives the life to the Rupa. That's in that sense it is described, and life is through the 6 sense bases. Vinyan Pachaya Naam Rupa. उसमें तो डिस्क्रिप्शन वो दे रहे हैं उसको समझाने के लिए कि the interaction between that part is also there, but human beings are essentially this. Okay. Body and mind, that's it. Human being is essentially in सामान्य भाषा में शरीर है और मन है, उस सेंस में बताया गया. तो मैंने कहा था कि हम मन को अभी आगे चर्चा कर लेंगे, अभी हम शरीर की ओर देख रहे हैं, तो उसको समझ लें ठीक से. So, and another thing is, the other thing what we were discussing is the elements. Element is not labeled, but like, you know,
It's just been seeing the arising or ho raha hai, ye, like, without labeling it as such. So that is what Bhanteji was saying, like, like I'm not able to. It's up to one, really. In the initial part of analysis, one can label it. There's no harm. And then eventually one becomes quite conversant with it. जैसे कहा जाता है ना कि सांस को देखें कि लंबा है, छोटा है कि छोटा है. That's a part of the process in the beginning. Eventually we drop it. और कई जगह कहा जाता है, जैसे थाई ट्रेडिशन में कहा जाता है कि आप बुद्धो शब्द बोलिए. That is a part for beginning process. Red mind gets stuck, then you drop it. There's no need to do that because the objective is attained. The objective of understanding dhatus is to see the experience in terms of those basic, separate, distinct experiences or a combination of them. The main thing is to see their arising and passing away and their origin. So there is no need to label it as such. Also, it's okay. Yeah, that's no problem. Okay. And then third thing is this Rupa, this 28 material phenomena which is there. Now we all know the 4 elements, which is very clear. Ye baki ke, how does it influence in our practice, especially in our practice and understanding? बाकी तो बड़े ग्रॉस है ना. आँख कान नाक तो क्लियर इन्फ्लुएंस करते ही है ना. उनके ऑब्जेक्ट भी तो इन्फ्लुएंस करते ही है ना. So they're quite obvious, straightforward things. That's all. The question was not that. The question was कि जो material phenomena है, especially in terms of the objects of the senses, उनका जो impersonal nature है, मैं अभी तक in one sense वहाँ नहीं पहुँचा हूँ. That was what my point was. So using some of these frameworks जो आपने अभी बताए हैं, it kind of seems okay to consider myself, one's own body, as not as something that is conditioned. Kind of it seems. But जब मैं उसको कोशिश करता हूँ objects or senses में extend करने की, तो I'm not yet sure. That's one area of fuzziness. और दूसरा मैंने ये ऑब्जर्व किया है that it once it becomes apparent to me कि अच्छा या ये ठीक है, अब ये समझ आ गई. And then when some particular sutta comes in, for example, आपको याद होगा जब समुदय की बात हुई थी, it really threw me off track, है ना. So I'm not so sure कि रूप संबंधित जो सारे एस्पेक्ट्स सूत्रों में कवर्ड है उनसे मैं पूरी तरीके से at ease हूँ. With respect to कर्म मुझे वो दिक्कत काफी समय से नहीं आई है. So whatever comes up with respect to karma, it does appear to me to be at least okay in terms of understanding. It doesn't throw me off. So that was my basic point that I was making about group. So this material phenomena, it's part of the 28 only, right, sir? I'm also now confused about it now. We should talk about those concretely produced matters, which are these, and the primary ones are these. 5 जो हमारी इंद्रियां हैं और उनके जो corresponding objects हैं, ना. तो जो objects हैं, those objects also are arising because of certain conditions. They're not fixed entities. They're also impermanent. They're also, attachment to them causes suffering. So they have the same characteristics. The arising of sound, this is speech, है, शब्द है. That is a result of so many phenomena happening behind it. तभी तो वो होता है, नहीं तो कैसे होगा. कोई भी साउंड अगर अराइज हो रही है, शब्द पैदा हो रहा है, तो उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस चाहिए शब्द का, और फिर वो हमारे कान तक पहुंचने के लिए और कंडीशंस चाहिए. So the very phenomena of that, similarly for taste or touch, there are so many other conditions which are responsible for arising of those external ayatans, and they all are impermanent. They arise from impermanent conditions, and therefore attachment to them causes suffering. And if you use the Anatta Lakhana Sutta, therefore they should be seen as not belonging to certain person. So when I am speaking, for example, I can say I am speaking, but that's a matter of conventional truth. Reality is there's a
lot of conditions. I'm seeing all of you in there. I hear some words, and then evolution arises. There should be a response to them, and that evolution gives rise to Vayu Dhatu that moves up the body. The tongue starts moving, and some happens. It all has happened because of condition. I mean, I may have the feeling I'm wrong. That's a conventionally it's true, but practically it is happening because of so many conditions. The content as well as this expression is dependent on content and conditions. Same Sir, thing with two of yours. what I realized ना सर, जो आप ये बोल रहे तो अभी समझ में आ रहा है, when in reality when we are like you know day to day occurrence में, ये मैं अपनी बात कर रही हूँ, इतना wisdom ने, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं होगा, the way you are explaining कि this धातु thing and all conditional phenomena ऊपर से समझ में आ रहा है, like when we are practicing it, I mean, at least I'm not going deep and understanding and breaking it in so many things and dissecting as such. Then once we ask intelligent questions, we can actually slowly get an answer to that. It's not a big deal really. It's a matter of really probing it further. So there's a बहिद्दा aspect जो है, जो आपने objects का बताया, उसको अगर हम उसका condition nature समझ लें, then that takes care of the aspect of the not self nature of material phenomena. Because they are impermanence, obviously है ना. नहीं, वो तो ठीक है, वहाँ दिक्कत नहीं है. It's this not self nature. Not self is basically when we see its condition arising, it becomes absolutely clear. Just to me it seems quite clear. That is a good route to understand. Okay. Yeah. Okay. So to sum up, I think I mean what I would also put it across is anicca is fine. Anatta at the right time it doesn't occur. Most of the time it doesn't occur. Maybe at sometimes it occurs. Anicca doesn't occur, beta. ऐसा नहीं है. We forget it so many times. But that is the issue is once we are convinced, then we know we have forgotten. Not that यार ये शायद गलत है. ये बात है ना. That doubt is a fundamental problem in our practice. अनिच्चा फिर भी थोड़ा जल्दी समझ में आता है, अनत्ता तो याद ही नहीं रहता है. जो टीचिंग है ना कि 70% तो हमारी प्रैक्टिस यही है कि हमें मालूम है क्या करना है, नहीं भूल जाते हैं. हाँ, तो मैं तो आई कंप्लीटली अग्री सर. मुझे तो पता है ना, जब आपने वो कॉन्सेप्ट की बात की तो देन आई रियलाइज्ड आपने कितने बार वो कार का बताया था. इट्स डिफरेंट पार्ट्स, सो दैट डिडंट अकर टू मी एट ऑल. इट्स ओके, वी आर ऑल लर्निंग नाउ. क्या बात है, देयर इज नथिंग टू फील अबाउट. इट्स ऑल लर्निंग प्रोसेस. हम सब सीख ही तो रहे हैं. बस यही पूछना था. निखिल जी, आपको कुछ स्पेशली अगर कुछ वो क्लैरिटी चाहिए बहिदा का, तो यू कैन लाइक यू नो, if I have like muffled up or not understood your question and I put it in a wrong manner, you can at least correct it. नहीं, ठीक है. Okay. थर्ड ग्रुप राजेंद्र जी आप करेंगे या आपने भी आउटसोर्स कर दिया था? शायद मैंने जाते सुना था कुछ. सुरेंद्र जी कह रहे हैं. राजेंद्र जी ने मुझे ड्यूटी दी है ये. जी. तो आई थिंक जैसा कि बाकी दोनों ग्रुप्स में भी बताया गया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में इतना बड़ा इशू नहीं है किसी के माइंड में, लेकिन आई थिंक डिटेल्स में कहीं they have to do more work. I think Vishal ji said that he has to apply his mind more thoroughly to Paticca Samuppada, and in this context जो आपने बातें की थी, he has to still study. I think जो मेन डिफिकल्टी आई थी वो अगेन वो धातु के एक्सपीरियंसेस करने में ही आई थी कि हम क्या अपने एक्सपीरियंसेस को धातु में ठीक से देख पाते हैं. दैट इज वन एस्पेक्ट जिसमें कुछ लोगों को डिफिकल्टी थी. बट उसका रिलेटेड डिफिकल्टी थी कि आकाश और विज्ञान को हम कैसे एक्सपीरियंस करेंगे. तो वो भी आपने शायद सुना था जब हम ये डिस्कशन कर रहे थे. और विज्ञान तो लोगों में आता ही है, वो आगे चर्चा ही करेंगे.
जी आकाश के बारे में जैसे मैंने निवेदन किया, वो it is more as a delimitation of matter. It is seen in that sense. So we don't, because it cannot produce, it doesn't produce a bodily sensation, but it doesn't mean it's not important. जी So the issue is that in the technical sense, in the teachings of the Buddha, that's how it is defined. I'm not saying other things are wrong and that's not right. In the technical sense, that is the definition of Akash in the teachings of the Buddha, and that's why it is put as a non-concretely produced matter, and therefore it is not seen as a part of Chetsika. Chetsika nahi mana hai. See? And it's not seen as a part of matter in this technical sense in Abhidhamma. तो उनका अपना एक रीजन है उसके लिए. सो वी कैन, अब दिक्कत ये होती है कि आकाश का बारे में भारतीय परंपरा में बड़ा इम्पोर्टेंट है उसका, और आयुर्वेद में अलग चीजों में दूसरी जगह में, और कई हमारे आचार्य भी उसको महत्व देते हैं. और आकाश के आधार विजुअलाइजेशन ऑफ स्पेस इज यूज्ड एज ए jhana practice, so then that has its own importance. But in terms of matter, defining matter, because of the भगवान की टीचिंग का उद्देश्य है एज एक्सपीरियंस्ड बाय अस. तो हम अग्नि धातु, पृथ्वी धातु, वायु धातु और कुछ हद तक जल धातु का अनुभव कर सकते हैं. बाकी आकाश धातु को हम विजुअलाइज कर सकते हैं by looking at, for example, the example which we find in the suttas is space between our ear, nose, the ears, the space in the food pipe, in the lungs. So these are the kind of examples which Buddha gives to us to understand that yes, there is a space which is required to delimit matter. Where space nahi hoga, to there will be no matter in that place, in that sense. So from that perspective, we can understand. But can we experience space directly? I would say for the time being, no. That's because what does space consist of? There are theories and phenomena about it. We don't really, because हमारा उद्देश्य उतना ही है ना, limited to the primary teachings of Buddha. So I'm trying to limit it so that we see that within that domain also we have enough knowledge and enough wisdom to be able to come out of the attachment to these skandhas. Okay. Plus, I think people did say that they are in different stages of appreciating this understanding. That's true. They're not fully understood everything, but they're trying to. So that is one thing. And one thing that I just realized now, that in our group we didn't even discuss Bahida. We only were discussing kind of internal stuff. So that speaks a lot about our sati, perhaps in some sense, collective sati. Thank you very much. Regarding dhatus, I would again draw your kind attention. मैंने कहा था आहार समुदयो, रूप समुदयो, and ahar samudaya was related backwards to the craving. So it's craving which gives rise to the ahara, and then that results in the impact on the rupa. So this complete chain needs to be kept in mind, because that is how even the origin of this body is because of the craving of in the stream of consciousness is existing, and every moment that is happening. So that part also is to be appreciated. Okay? Dharsab, why are you limiting ahar samudayo, craving samudayo, craving pachya ahar samudayo, रूप samudayo to धातु? ये मुझे समझ नहीं आया. ये तो जेनेरिकली ट्रू है ना, आप इसको धातु के कॉन्टेक्स्ट में क्यों कह रहे हो? नहीं, वो लोग कह रहे हैं ना कि धातु समझ नहीं आ रही. So वहां पे जो हमने कहा था रूप के कंडीशंस में, we had said it there that what is रूपा? रूपा is चार महाभूत और उससे उपादाय रूप, ये कहा था ना. उस सेंस जो हमने सूत्र जो पढ़ा था उसमें ये बात आती थी कि जो 57 सूत्र था ना, 7 केसेस थे, उसमें ये था, पहले था रूप की डेफिनेशन क्या है, फिर उसका समुदय कैसे होता है, फिर उसका निरोध कैसे होता है, निरोध का मार्ग कैसे.
तो रूप जो है उन्होंने डिफाइन किया था 4 महाभूत और उससे डिराइव्ड मटेरियल फॉर्म। आई एम देयरफॉर पॉइंटिंग आउट दैट उसके अंदर भी जो समझने की बात है वो क्रेविंग है, और वो जो आप कह रहे हैं एंटायर रूप इज दिस 4 धातुस एंड डिराइव्ड फॉर्म, नथिंग अदर देन दैट। So I'm just trying to be technically point out that dhatu connection with the craving should be appreciated. That's, because depending on the craving will be the ahar, and that ahar will produce dhatus, and how it will transform our rupa according directly through the ahar of physical ahar as well as through the mental. तो इसलिए वो chain को complete करने के लिए right, I get it. सत्ताठान Sure. अगर वो फ्रेमवर्क यूज करें तो फिर ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं। या श्योर, ओके। राजेंद्र जी, अगर आपने कुछ या किसी और ग्रुप के मेंबर को कुछ कहना हो हमारी डिस्कशन के बारे में। I think it's okay. Sir, I want to ask something. Here you said ki samma ditti. So, in what sense do we like when we are saying bahidda, हमारा रूप भी हमारा नहीं है, दूसरों का भी. So, do we look at the other also saying कि ये भी 4 एलिमेंट से बना हुआ है, ये 5 खंडी है? So, is that, are you referring to that samadhi in that way, so that there is no attachment to my body, neither to the other person's body as such? Yeah, of course. Rupa means every roop. That's why हमने पढ़ा था ना, जो मैंने उसमें सती पठान से पढ़ा था सारा रूप कौन सा है, वो मैं ये वाला रूप जो अंदर है, जो बाहर है, जो दूर है, चाहे पास है, चाहे सूक्ष्म है, चाहे बड़ा है, हीन है, चाहे महान है, एक अर्थवार में चाहे देवलोक का ब्रह्म, ब्रह्मलोक का ब्रह्मा, सब्बम रूपम, सब्बम रूपम। अनंत लखन से आपने दिया था वो शायद। मैं so many, I think we quoted Anatta Lakhana. It's all written clearly. सारे रूप जो हैं अनित्य हैं, दुख है, अनात्म है, और उन सबको ना ये मेरा है, ना ये मैं हूँ, ना ये मेरी आत्मा, ऐसा मानना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। Okay, one more thing I want to ask you, sir. I have asked you so many times, but I would like to ask. Practice, while we are practicing it, ये सब तो समझ में आ रहा है. Okay, I mean, so-called समझ में आ रहा है, if you want to take it in that way. But while we practice it, what is that exactly we should do it now is a big question. Now I'm coming back to the same thing. अब हम देख रहे हैं. समझ, whenever we take body personally, we remember teaching. Whenever we think something happening to somebody dear to me, and I take it personally, and I should come and remember the teaching. That is the use. Okay. So whatever suffering produces. Okay. One more thing is, okay. Don't forget it, but we'll again remember it, and then suffering will reduce. That is the whole idea, reduction of suffering. All right. So one more thing I want to ask in this 4 points आपने जो दिया था, that body is not yours, or the paticca samuppada XYZ. Not necessary I have to put everything. I can only focus on one point of kamma, or I can look at paticca samuppada and practice it, whichever is applicable to me and appeals to me at that point of time also, right? Perfect. Yeah, certainly. There are various arguments to get buttress the point, and different people get convinced differently. It's fine. No problem. Okay. मैंने ये पाया धर साहब कि कहीं फिर फिसल जाते हैं अगर उसको हम कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं समझते तो। At least that's been my experience. शुरू तो करें कुछ तो। So I've become little. ओवरऑल साइंस में समझ जाएं, फिर जीवन में जब उतरेगा तब दिक्कत होगी, then we'll remember कि ये तो ऐसा नहीं है, ये कौन सा क्या दिक्कत है. Of course those other khandas will have to be understood, but then we can see, I mean, जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंसिव होगी उतना सहज हो जाएगा, उतना आसान. So एक चीज मुझे समझ में आ रहा है सर, इतना सब कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ तो याद आएगा, एटलीस्ट समथिंग विल कम इनटू. It's not everything. At least. सर 4 बार करो, 4 बार, एक बार से नहीं होगा. It's a good point. Yeah, worth reflecting. At least I would look at it that way. If not all for, at least something will come into my mind at some point. Certainly, that's very true. From practical perspective, it is true. Something which will appeal to me at that moment, and then I can remember. I can open up my notes and see kya hua, what happened. Good, very good. Thank you very much. So request Bhante ji for blessings.
Thank you, Dharsab. Thank you very much. अब धर साहब, अगर ये हमें लग रहा है थोड़ा समझ आ गया, अब आप कोई नया सूत्र निकाल कर ले आओगे, उसके बाद दिक्कत हो जाती है, वहां बहुत प्रॉब्लम है. I'll stop. I'll Well, stop now. I mean, that I'm saying that only partly as a joke, but it is true that, for example, with respect to Rupa, I always felt कि हाँ, more or less साफ है. फिर आपने वो समुदाय वमुदाय की सारी बात शुरू की, then it, as you know, it took me a lot of time. So in that sense, maybe psychologically, Dharsab, we should actually be ready कि Buddha's teaching इतनी sort of detailed है कि we may actually be thrown off at some point, and to be ready for that. I mean, actually, though, I consider it as my good fortune whenever I get thrown off. चलो देखें तो सही क्या हो रहा है. I mean, so I didn't really plan for these suttas as such. I just searched for them, and I had a certain question which was not resolved, and then the answers came through these suttas. And obviously, it takes time. इसमें कोई शक नहीं. I mean, I can understand what Gita is saying. It's true, but there is a value. जैसे आप कह रहे थे, comprehensiveness का अपना value है. क्योंकि हर एक में कोई ना कोई nuance छूट जाती है. हर एक सूत्र में ऐसा नहीं है. Anatta Lakhana Sutta is very powerful. It transforms the world, but it doesn't contain all the nuances of it. See, that is the problem. So what do you do, sir, when you're thrown into such situations? If you can also just share it. I first pose, what is the point which is not clear to me? And then I'll try to remember if I have studied somewhere. If I have not, then I should search in Access to Insight or Sutta Central, giving some keywords. कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता. उसमें कीवर्ड एक डाल दो तो उसमें 2000 से आएंगे. And you scan them one by one and shorten the things, and you find something or the other which is very useful. But it takes time. So the days pass by in trying to locate one sutta, but it's a great joy to find something which is so relevant. तो जो doubts रहते हैं वो इस तरह से clear हो जाते हैं. ऐसा मेरा अनुभव रहा है. तो फिर धरसा जब sorry. Go on. No, so what you suggest is one should read suttas and Of course, I don't know, no doubt about it. At least the ones which we are quoting, we should read them first and again properly with translation and reflect upon them, and get, because we have not exhausted those. I can assure you, we have not exhausted all the nuances of those suttas. They're very deep, very, very deep. कईयों के unfortunately ज़्यादा discussions available नहीं है. कुछ की तो हैं, कुछ की नहीं है. Satta-Atthana Sutta is not so popular, for example. I try to search everywhere. किसी ने किसी senior bhikshu ने talk दी होगी. Couldn't find. So, but then it doesn't reduce their importance in our practice. So we have to struggle and try to find out. Look up dictionary, look up this, see the translation. कई जगह translation जमता नहीं है. So it's a kind of learning process for me, constant learning process. And then मैं आपको सुना देता हूँ, भाई ये सीखा है, देखो कैसा लग रहा है. So therefore, जब हम निखिल आपको म्यूट करना पड़ेगा. I'm getting something. So जब हम ये कहते हैं कि मुझे समझ आ गई है, maybe it is more appropriate to say कि मुझे अभी ऐसा लगता है कि अभी कुछ समझ आया है, और हो सकता है कि वो भाव के मुझे लगता है मुझे समझ आ गया वो बदल जाए, and I may realize in the future that maybe it's not so clear. बिल्कुल, this has happened with me again and again. Personally, yeah, it's very true, very, very true. Because the nuances are so many that, and then when we really get at them, you really feel joy. No? It gives rise to preeti. Without any sitting for long meditation, you get joy. And sir, they are more like stepping stones. मतलब there is, I mean, सर डरने का जरूरत नहीं है कि अरे मैंने गलत, वो stepping stone बन जाता है आगे जाने का. Of course. I have gone through so many changes in my understanding in the years. And it doesn't mean that earlier understanding was absolutely wrong or false. I have built upon that. I realized the limitations and this, then this limitation, then this, its limitation, then this. Because when you are constantly investigating your own understanding,
कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है यार ये जम नहीं रहा है. Then you begin to search. That's it. नहीं, वो जो था ना निरामिष दुख, that निरामिष दुख leads to these kind of searches. करो क्या हो रहा है, समझ क्यों नहीं आ रहा, क्या है problem? And then slowly and slowly you become more and more confident in the teaching, in the practice. Then you don't fall off. Sir, isn't it also not, I mean, the way I look at it, the more you are thrown into situations or circumstances, the Yeah. more you understand it. Otherwise, you will not get an opportunity, at least for me, like being Yeah. very ignorant, because there was no such opportunities. Now, when the opportunities are coming in different forms, which is like the more you are able to understand what, at least what life is in a simple way, if I want to put it across. Yeah, that's very true. See, law of, कभी कहा जाता है ना भारतीय परंपरा में कि प्रकृति बड़ी दयालु है. What does it mean? It's actually law of karma. That appropriate conditions will be thrown at you to check where are you. Like no matter how much ever you try, nothing works. So then you really understand what is happening, and that is something which one need to. I mean, at least I look at it that way. We always tend to get an idea कि मुझे समझ आ गया, and then some situation arises where you know यार तो ये तो बिल्कुल ही ऐसी situation आ गई कि मेरी सारी समझ जो है अपनी जगह रह गई, कुछ कमी रह गई. Then you reflect, then you, that becomes a kind of a life-changing device for you. ये मैंने इस तरह से साधना इतने वर्ष की, उसका ये उसमें कुछ कमी नजर आ गई क्योंकि I'm not able to handle this situation. Then you investigate deeply. Then again, so many years things go on, you practice, and then again something even more difficult arises. It just throws you off the gear. अरे ये क्या हुआ भाई? मैं तो सिर्फ खुद ही नहीं लोगों को भी समझा रहा था. ये क्या हो गया? Then you say, अच्छा अभी और काम करने की जरूरत. Then suddenly some teacher is thrown in, some writing comes up, and you see अच्छा ये भी है. Then you work on that. Then again you find same thing. ये भी इसमें भी कुछ जम नहीं रहा. So this is how we learn, by steps. But it doesn't mean that earlier learning was useless. It's like studying class 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 10वीं क्लास में पहुंच गए तो थोड़ा कहेंगे कि प्राइमरी बकवास थी. We can never say that. उसकी बेसिस पे तो आगे पढ़ेंगे, नहीं कैसे पढ़ेंगे? It's all like that. It's all education program. We're all under in a school. I keep on quoting that thing so often. आप लोगों को शायद सुना होगा कि एक किसी अमेरिकन ऑथर की एक स्टेटमेंट है. In the school we learn the lesson and then we give a test. In the life we give a test and then we learn a lesson. That's it. That sums up the whole. I mean, in my own journey it has been like that. Sir, I also accept. I don't know anything. I'm learning. So that's it. Good. आज बहुत देर हो गई. मेरे तो धूप आ रही है तो